know. I get so many tweets from them every day. There's so much love coming from Pakistan every single day that I really don't know how to give it back. So here, since you're being my medium, thank you Pakistan for all the love that you've given me so far. I think it'll be a great. I see a lot of Pakistani television serials coming into India, and my mom is hooked to a lot of them. They're doing very well there, and we've always had such a mixture of amalgamation of talent, be it when it comes to singers and stuff. We have so many wonderful singers coming in from Pakistan as well. So I think it'll be great if both these film industries also merge. I think we can come up with some really great stuff. जो लोग वहाँ के हैं, जब भी हम मिलते हैं, हमें इतने मैसेजेस आते हैं, तो वहाँ पर कोई हॉस्टिलिटी नहीं होती है, कोई ऐसे हमेशा प्यारी होता है. तो आई थिंक थ्रू फिल्म्स के जरिए अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो बहुत ही अच्छा हो. Creativity is one language which everyone can understand world over. यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होता, यहाँ पार्शियलिटी नहीं होती, यहाँ साइड्स नहीं होती. जो बात दिल से कही जाती है वो दिल तक पहुँच जाती है. सो आई गेस दिस इज फिल्म्स or any kind of art is a wonderful media to build in the relationship. Well, we have a lot of Pakistani talent coming and working in our Hindi film industry. I work with Imran Abbas recently, and there's a lot of talent, there's a lot of confluence, and hopefully we'll make wonderful films together. I think it's fantastic that to know that the Indian and Pakistani film industry is merging together, and I hope that there are no boundaries when it comes to art and cinema and culture. So we look forward to working there as long as they look forward to working with us. So yeah, good luck, and hopefully I'll be in Pakistan soon, and I'm hoping that every artist from Pakistan gets an opportunity to work in India very soon. Carried away with just a script that consumes me. So I swear to God, I'm not having any sort of Amir Khan syndrome because I don't get those level of scripts. But all I can say is that whatever comes my way, I just have the ability to filter out a lot of the bad work. So whatever little good work I get, I just grab it. बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार बरकरार रहे, आप लोगों की दुआएं बरकरार रहे, और बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने जिस तरह से हमें सराहा है, हमारे काम को सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सभी का जो हमें प्यार देते हैं, हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं. इंशाल्लाह आप ऐसी दुआएं करते रहे हमारे लिए, और हमें बहुत खुशी होती है. आई थिंक इट्स अबाउट दिल में जो है और जो आपकी फितरत है, वो आपके चॉइसेस डिटर्मिन करती हैं. तो आई थिंक पिछले 6-7 सालों में जो मेरी जर्नी रही है पर्सनली, वो कहीं ना कहीं मेरे चॉइसेस में रिफ्लेक्ट कर जाती है. मैंने फिल्म प्रोडक्शन एक ऐसी उम्र में स्टार्ट किया जब कोई लड़की करती नहीं थी, ना ही कोई लड़की ने कभी सोचा था कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर बन सकती हूँ. तो आई थिंक इट्स अबाउट जस्ट एक्सपैंडिंग एंड वाइडनिंग माई होराइजन्स एंड वांटिंग टू डू मोर देन what others have possibly done. It's very tough. It's very daunting. I think you need a very strong heart to be able to deal with the pressure of being a producer, but I'm enjoying it thoroughly. I've never been more satisfied with work than I have been making films. जी बहुत खुशी है जो आपने कहा उसको सुन के. बहुत खुशी है कि हिंदुस्तानी फिल्मों को इतना प्यार मिलता है पाकिस्तान में. Loads and loads of love to all the fans there, and I hope they enjoy themselves when they watch our movies. I'm very very happy to know that. जी ये चीज़ें usually producers decide करते हैं, but बहुत खुशी होगी अगर ऐसा कुछ हुआ. अगर आपको पाकिस्तान इनवाइट किया जाए, शाहिद कपूर वेलकम टू पाकिस्तान. जी आज तक तो किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई बुलाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा.